The UPA government's announcement of its mega cash transfer scheme has triggered a major political battle between the government and the opposition. The BJP has taken the lead, taking a dig at the government's ambitious 4 lakh crore rupees project, accusing it of populism, a charge vehemently denied by the Congress. With the assembly polls round the corner, the UPA launching one of its most ambitious projects to woo the Aam Aadmi. The Congress party welcomes the decision of the government to launch the direct cash transfer scheme on the 1st of January 2013. An upbeat government unveiling the whopping 4 lakh crore project, targeting both the below poverty line and the middle class in the form of cash subsidies. A well-timed move that has clearly stumped the opposition, who have been battling it out to corner the UPA in the parliament over the FDI issue. कांग्रेस की नियत है कि ये राजनीतिक खिलौना बनाए, ये कोई सिस्टम में बदलाव की बात नहीं कर रहे। अगर सरकारी कार्यक्रम है तो उसकी घोषणा कांग्रेस मुख्यालय से क्यों? This is another way of the government to cut subsidies to the poor and to the working people. We have been demanding a universal system, and this direct cash transfer is totally against that, so we strongly oppose it. The mega scheme snowballing into a major political powwow. जिस तरह ये सरकार इस काम को कर रही है, अंजाम दे रही है, उससे साफ जाहिर है कि लोगों की भलाई इनका उद्देश्य नहीं है, राजनीति और खास करके चुनावी राजनीति इनका उद्देश्य है। बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह के बेबुनियाद आरोप नहीं लगाएगी तो और क्या करेगी? पर मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें। The government's attempt to regain popularity through this move. However, on the ground in Alwar district of Rajasthan, where the pilot project of the scheme was launched, questions still remain. नहीं मिल रहा है। खाता खुल गया आपका? खाता 1 साल हो गया, पैसा भी नहीं आता है। 25,000 लगभग उपभोक्ता थे, उनमें से मात्र 13,000 का अकाउंट खोले गए और 13,000 में भी मात्र अभी 4-5 हज़ार की सब्सिडी डली, बाकी के में अभी दिसंबर से अब तक सब्सिडी डली नहीं है। Meanwhile, with the political fight intensifying, the government faces an uphill task to implement its dream project in the coming days. Bureau Report, Times Now.